हेलो ऑल। तो आज हम स्टैड प्रो के डे 16 के बारे में जानकारी लेंगे, दैट इज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्टील ट्रस। सो लेट्स गो विद दिस एग्जांपल, दैट इज एनालाइज एंड डिजाइन अ पिच टॉप कॉर्ड फ्लैट ट्रस फॉर अ स्पैन ऑफ 20 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 16 मीटर। सो अब हम ये जो प्रॉब्लम है इसके हिसाब से जाएंगे। दिस वन इज अ स्पैन ऑफ 16 मीटर एंड हाइट इज ऑफ 5 मीटर कॉलम एंड यहाँ पे ये 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ पे मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिया है, दैट इज ISHB 200 स्टील मटेरियल यहाँ पे दिया है एंड द सपोर्ट्स आर ऑफ फिक्स सपोर्ट्स। बाय यूजिंग दिस लोड वी हैव टू analyze the design. So let's go with the STAD Pro. So click on new project, click on space truss, click on next, click on add beam and finish. So now I have to increase the length. So for that purpose click on edit option and then X direction I have to increase is of 16 meter. Click on OK, click on front view. अब हम यहाँ पे draw कर लेंगे. Just check out this one. This one is 3 meter, 2 meter. Then the span is of 16 meter and this one is 0.4 meter. So in STAD Pro, click here for snap node beam. This one is 5 meter, 16 meter. Then from this point node we have to add node at a distance of 0.4 meter. So for that purpose select node cursor, press Ctrl, click on translational repeat to the y direction. Number of step is of 1, 0.4 meter. Link step, click on OK and then one more time add one more time, join with the add beam. So यहाँ से इसे हमने join कर दिया. Select this, right click, insert node in a exact midpoint, click on OK. From this point 2 meter I have to add. So just select this node, click on translational repeat in y direction. Number of step is of 1, 2 meter. Link step, link नहीं करेंगे हम. Click on OK. So just erase this node, delete. Now I have to join. So one more time, geometry, add beam from point to point. Just join with this. Now select this, right click, insert node, add midpoint, click on OK. Geometry, add beam, add point to point, like this. Next is I have to add node with a distance of 2 meter. Just select this beam, right click, insert node, insert n number of node is of 3, click on add endpoints. The spacing is 2 meters, so 2, 4, 6 like this. Click on OK. One more time select this, right click, insert node, endpoints are of 3. Click on OK. Now I have to join this. So go for the geometry, add beam point to point. Just connect these particular nodes with add beam method, like this. One more time select this, right click, add endpoints is of 3. OK. Right click, insert node, 3, add, OK. Geometry, add beam from point to point. So like this, geometry, add beam. So
So like this way we complete this geometry. Here I have to add a node at a distance of 3 meter. So just right click, insert node with a distance is of 3 meter. Click on OK. Add new point. Click on OK. Right click, insert node with a distance of 2 meter. Add new point. OK. Like this. And then just select this complete truss. Click on translational repeat to the Z direction with number of steps. So I want this distance is of 20 meter. Number of steps are of 10 with a distance of 2 meter distance. Click on link steps. Click on OK. Click on 3D view. So like this way we create a truss. According to our problem यहाँ पे ये beams हमें remove करने पड़ेंगे. So for that purpose just click over here. Select these particular beams. Click on delete option. Click on yes. Click on 3D. Now I have to add the geometry. And अब हमें ये तो हमारी geometry complete हो गई है. अब हमें property assign करनी है. So first यहाँ से इस तरह से ज्योमेट्री कंप्लीट हुई है हमारी. अब हमें प्रॉपर्टी असाइन करनी है. सो टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी क्लिक ऑन जनरल, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी ऑप्शन, क्लिक ऑन डिफाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन सेक्शन डेटाबेस. एज आई हैव टू ऐड अ सेक्शन, जस्ट क्लिक ओवर हियर. सो मटेरियल स्पेसिफिकेशन अब हमें देना है. So cross section is of ISHB 200, ISWB 175, ISMC 200. So just click on section database. This is the American standard. I have Indian shapes. So ISHB 200. So click on here ISHB. Select this. ISHB 200. Click on add option. The material is of steel material. Click on add. Click on close. One more time click on section database. Next is ISWB 175. So click on Indian. ISWB is of 175 here. This one is ISWB 175. Click on add option. The next is ISMC 200. So click over here ISMC 200. Select this channel. It's a channel. Click on this ISMC 200. Then ISA 80-80-10. So it's an angle ISA 80/80/10. Just scroll down and then select this 80-80-10. Click on add. Click on close. Now I have to assign this particular section to this geometry. So for that purpose click on ISHB. ISHB 200 ये जो है ये कॉलम्स के लिए अप्लाई किया है. सो जस्ट गो थ्रू हियर. यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट किया है. लाइक दिस. प्रेस कंट्रोल. सिलेक्ट दिस कॉलम्स. क्लिक ऑन 3D. क्लिक ऑन assign to selected beams. Click on assign. Yes. The next is ISWB is of beams. So beams के लिए apply किया है ISWB. So go for beams. So click over here. Select these particular beams.
like this. Click on assign to selected beams, assign. Then the next one is ISA 80-80-10. We have to apply this to the particular rafters. So for that purpose, just select this, click on this, select it, and then click on assign to selected beams, assign. After clicking on assign, just check it once. So like this way you can apply. अब हमें नेक्स्ट अप्लाई करना है ISMC 200. सो सिलेक्ट दिस ISMC 200 3D एंड देन रिमेनिंग पार्ट जो भी आपका रह गया है उससे अगर आपको ये जो है ये अप्लाई करना है तो उसके लिए जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन मिसिंग एट्रीब्यूट्स एंड देन क्लिक ऑन मिसिंग प्रॉपर्टी, सिलेक्ट ऑल एंड देन यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका सिलेक्शन आया है. यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन नहीं हुई है. सो जस्ट सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस. नाउ वन मोर टाइम चेक ऑन 3D रेंडर. सो लाइक दिस वे कंप्लीट प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से असाइन हो गई है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू असाइन सपोर्ट्स. सो सपोर्ट्स अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन सपोर्ट ऑप्शन, click on create option, click on fix support, click on add option, select this support, go through the side view, select this base supports by node. So assign to selected node, assign, yes. Then click on 3D view. So like this way यहाँ पे सारे supports add किए हैं. Now we go for the load and definition. Let's check for load case. We have to apply seismic load, dead load, wind load and load combinations. Seismic load, there is a description as a zone 3. Response reduction factor is of 5. Importance factor is 1.5. Soil type is hard. Structure type is steel. Damping ratio is 0.02. We have to apply this along positive and negative lateral directions. So let's cover it in StatPro. So in StatPro, click on definitions. First we have to add seismic definition. So for that purpose, click over here, click on add option, click on seismic parameters, select IS 1893, 2002 and 2005. Click on generate, add zone 3. Then spatial RC moment resisting frame is of 5. Then importance building is of 1.5. Soil type is hard soil. Select a steel frame building. Then damping ratio is of 2%. Click on generate. Click on add option. Then as I already told you that we have to self-weight according we have to add the self-weight is of in positive direction. सो पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको 1 ही सेट करना पड़ेगा. क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, सिलेक्ट लोड केस डिटेल्स, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन. वी हैव टू ऐड seismic load. So just drop down this, click on seismic. So seismic at x direction, then s minus x direction, then s at z direction, then s at minus z direction. Click on close option, select this particular load, click on add option and then click on seismic load. The factor is positive 1, click on add, click on s minus x, add seismic load, factor is -1 on x direction, add and close. S minus z, seismic load z direction is factor is of 1, click on add and close. S minus z, seismic load z direction, factor is of -1, click on add and close. So इस तरह से हमने seismic load अप्लाई किया है. Then we go for the dead load. Just drop down this and select dead load. Dead load, give the title, click on add option and close. Click on dead load and click on self weight for the dead load is of -1. Click on add and close. Select this self weight and assign to view and assign yes. Self weight apply करने के बाद we have to apply live load.
we have to apply a dead load. डेड लोड में ही नोडल लोड हमें ऐड करना है. सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन द डेड लोड, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन नोडल लोड. यहाँ पे नोडल लोड जो दिया हुआ है वो है -1.5 एट बोथ एंड्स एंड 3 किलो न्यूटन एट इनर पोर्शन. So just we go with this. So Fy is of -1.5. Click on add option and then click on close. One more time click on dead load. Click on add option. Click on nodal load. Is of -3 kilonewton. Click on add option and then click on close. Select this Fy -1.5. Select the front view. Then select this. Click on node cursor. Apply. Select this both ends of a node. Then click on assign to selected node. Assign yes. नाउ यहाँ पे हमें इसका स्केल चेंज करना है. तो स्केल चेंज करने के लिए यहाँ पे स्केल ऑप्शन पे क्लिक किया है. 1 सेट करेंगे हम. 1 अप्लाई लाइक दिस. सिलेक्ट दिस. क्लिक ऑन इंटरनल लोड्स. जस्ट यहाँ से इस तरह से लोड्स, सारे लोड्स को आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे. देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड नोड. असाइन यस. सो लाइक दिस वे. एंड नाउ आई हैव टू ऐड the labels. So click on label, node point, beam number and load value. Click on apply and OK. So like this way you can apply. node points की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, beam value की भी ज़रूरत नहीं है. like this. So इस तरह से हमने लोड्स अप्लाई किए हैं. डेड लोड अप्लाई किया है, सेल्फ वेट अप्लाई किया है, सिस्मिक लोड. देन गो फॉर द विंड लोड. सो विंड लोड अप्लाई करेंगे. क्लिक ऑन विंड डेफिनेशन. क्लिक ऑन ऐड. Type 1 wind 1. Click on add option. Click on close. Select this wind. Click on add option. Intensity we have to add. So wind intensity is of 0.554 kilonewton per meter square at the height of 7 meter. So 0.554 at the height of 7 meter. Click on add option. Factor is of 1. Click on add option and click on close. Select this exposure factor. Assign to view. Assign yes. Then one more time click on load case details. Add option. Select wind load. WX direction add. Wind load at -x direction. Then wind load at Z direction. Then wind load at -z direction. Click on add and close. Now just edit. Click on this. Click on add option. Wind load with a windward face is of factor is 1. We have to set minimum and maximum range. So for that purpose just select this bottom node. Minimum range is of 000 and maximum range is of 7.4. So add 7.4 maximum. It's an open structure. For that purpose यहाँ से हमने इसे open structure consider किया है. Click on add option and then click on close. One more time select this. Click on add option. Click on wind load. X direction -1. Minimum is 0. Maximum is 7.4. Click on open structure and click on add and close. Then the next is WZ, wind load with the Z direction. Factor is 1. Maximum is 7.4. Click on add option and close. Select this at -Z. Click on wind load. Click over here. Click on Z. Its factor is of -1. 7.4. Click on add option and then click on close. Then we have to add load case details. After that load combinations we have to add as per IS code. So select this. Click on add option. Click on auto load combination as per IS code Indian code. Click on generate node load and then click on add and click on close option. After that we have to analyze
सो एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस एंड प्रिंट, क्लिक ऑन ऑल एंड ऐड, क्लोज, कमांड ऑप्शन, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, ऑल, ओके, एनालाइज, रन एनालाइज, सेव. So make sure you have 0 errors. Click on view output file. So this one is your output like this. So this is the complete output for your project. Then close. Then go for the post processing. Select all. Click on apply and OK. And then go for animation. Click on deflection. Click on apply and OK. So here is the little bit deflection according to wind load. यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट करके डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं. So here is the reactions, forces, stresses, graphs, bending moment and shear force diagram. Animation, deflection यहाँ से कर सकते हैं. Then the next is यहाँ पे जो भी हमने ये जो है ऐड किए हैं, ये बीम्स ऐड किए हैं, लेकिन इसे मुझे एज अ ट्रस मेंबर सेट करना है. So for that purpose, just go through the modeling, click on general option, click on specification, click on beam option and then select a truss. Then this specification has no additional parameters. Click on add option and then select these members. अब हमें ये जो beam member से इसे truss से convert करना है. So for that purpose, just this, select this and then assign to selected beams, assign yes. Yes, so this is all converted into truss. Then one more time click on analyze, click on all, click on add option, close, analysis, perform analysis, all, okay, analyze, run analyze, save, go for the post processing mode, click on done, select all loads, click on apply and okay. So this is what the, if you want to see the deflection you can see this. So यहाँ पे थोड़ा बहुत deflection आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा. Then we go for the design. So design के लिए click on modeling, click on design option. Design option पे click करने के बाद यहाँ पे select parameters. लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको IS 800 के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा. We have to design for the steel. अब तक हमने सिर्फ कंक्रीट के लिए डिज़ाइन देखा है, शेयर वॉल के लिए डिज़ाइन देखा है. नाउ वी गो फॉर द डिज़ाइन फॉर स्टील. सो क्लिक ओवर हियर फॉर द स्टील एंड देन सिलेक्ट IS 800 कोड. यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. देन सिलेक्ट पैरामीटर्स, क्लिक ओवर दिस एंड फ्रॉम द अवेलेबल पैरामीटर्स यू हैव टू चूज yield strength of steel like this. Select this, click on OK. Then click on define parameters. Yield strength of steel is 415 into 1000. So यहाँ पे हम 415000 ऐड करेंगे. Click on add option, click on close. Then go for the commands. Then we have to select the check code. Click on add. Select member takeoff. Click on add option. Then click on takeoff. Click on add option and then click on close. Now we have to assign these particular parameters. So yield strength is we have to assign. So click on this FYLD. Click on assign to view, assign yes. Select this, click on assign to view, assign yes. Select this, assign to view, assign yes. Select this, click on assign to view, click on assign yes. Now select geometry. Select commands, analysis, perform analysis, all okay. Analyze, run analyze, save. Then go for view output file. Click on done option and then click here for the result. If you want to see steel design you can click on this. So this one is the steel design. If you click on steel takeoff, so here is the steel takeoff, that is ISHB 200, is length is of 1110 meter. The weight of this it is 40.138.
and IS 808010 is of length is of 531.56, total weight is 61.659. Here is ISWB's weight, here is ISMC's weight, and the total weight for the steel is 226.688 kilonewton. This one is the total weight of steel. So in this way you can give the analysis and design for steel truss. So this is all about day 16. In the next video we learn day 17 commands. Thank you.